Today we are going to study the question answers of Ghar Pyara. Okay, so first of all, I'll tell you the Maukhik question and its answers. Our first Maukhik question is Pakadam Pakadi कौन खेल रहे हैं? So, who is playing Pakadam Pakadi खेल? Okay, so let's see the answer. Answer is पकड़म पकड़ी चूहे खेल रहे हैं. So the rats are playing पकड़म पकड़ी. Okay, पकड़म पकड़ी कौन खेल रहे हैं? And the answer is पकड़म पकड़ी चूहे खेल रहे हैं. Now let's see the second question. Our second question is एक पंक्ति बनाकर कौन दौड़ रही थी? So in a line, who was running there in a line. Let's see the answer. And the answer is एक पंक्ति बनाकर चींटियां दौड़ रही थी. So the ants are running in a line. Now let's see the third question. Our third question is पंछी क्या कर रहे हैं? What did the birds are doing? And the third question's answer is पंछी एक दूसरे पर छपट रहे हैं. They are snatching. Okay, पंछी क्या कर रहे हैं? पंछी एक दूसरे पर छपट रहे हैं. Now let's see the last Maukhik question. This is our fourth and last question. कॉकरोच हमारे घर में क्यों रहते हैं? So why the cockroaches are living in a home? Our last Maukhik question's answer is कॉकरोच हमारे घर में रहते हैं क्योंकि वे भी इस घर को अपना समझते हैं. Okay, cockroaches are living in a home because they are also thinking that it's their home also. Okay, so we completed our Maukhik questions and now I'll tell you the Likhit questions and its answers. In Maukhik question, this is the first question. यह कविता किसके बारे में है? So यहाँ पर हमें ये लिखना है कि what is the topic of this poem? The answer is यह कविता सबके प्यारे घर के बारे में है. घर मनुष्य के साथ साथ उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी है. कविता में यह बताया गया है. So ये कविता जो है सबके प्यारे घर के बारे में है. This poem is about the sweet home. घर मनुष्य के साथ साथ उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी है. So where we are living means the houses where we are living, it's not only us but also the creatures, those who are living here. This house is theirs also. कविता में यह बताया गया है. So ये जो कविता है घर प्यारा, इसमें यही बताया गया है. Okay, now we will see the second question. Second question, छिपकली गश्त क्यों लगा रही होगी? We studied that lizards are wandering. So here the question is why they are wandering. What will be the reason for that? छिपकली कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए गश्त लगा रही होगी. So maybe the lizards are wandering to catch the insects. Okay, now let's see the third question. Third question, पंछी किसकी तरह झगड़ रहे हैं? So like whom the birds are fighting? And the answer is पंछी बालक और उसकी दीदी की तरह झगड़ रहे हैं.
The bird is fighting like the boy and his elder sister. पंछी किसकी तरह झगड़ रहे हैं? पंछी बालक और उसकी दीदी की तरह झगड़ रहे हैं. दीदी मीन्स elder sister. Now we will see the last question. Our last लिखित question is, बालक माँ को क्या समझा रहा है? What did the boy is trying to explain to his mother? Or what did the boy trying to understand his mother? And the answer is, बालक माँ को समझा रहा है कि जो भी जीव जंतु इस घर में रहते हैं ये उन सबका प्यारा घर है. So the mother told to the boy that this is only our own home. So here the boy is trying to understand his mother that it's not only our own home. Those insects are living here. जो भी जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, those insects or creatures are living here. This is their home also. Okay, so we have completed our Maukhik and Likhit, both question answers. Now you can write all these question answers into your notebook.